And the freaky part is कि मुझे हमेशा same भूत दिखता था. Hi, welcome to my channel, or welcome back to my channel. I never used to say that welcome to my channel, welcome back to my channel, but now that we have 1K subscribers, I'm like, maybe I should be a little more professional, or maybe I should be myself. I don't know, we'll see about that. But you guys are not ready for this story time. So currently I was filming some other video, and then it just reminded me of doing this, story time. So I'm so scared to do it because literally in this room it happened, and fuck it, I'll just start. So for starters, I have to show you how my room is structured. Okay, so this is my bed. Now that door you see, that one, that opens to the balcony behind. Okay, and which has like those water tanks and all that. And then this door, this one, okay, this door is where we go down from. So I live on the second floor only, it's just my room and the balcony and all that, and then you go down from that. Okay, so that's like the main door that connects my room to the house, and that's the balcony door. And like right opposite to my bed is my gazebo. Okay, so now we know this. Now also I'll give you a story time, that like I'm giving you some context. So this is this. Okay, so I basically have 3 doors in my room, one in the front, one in the back, and then one there which connects it to the main house. Now I'll show you. So the house next to my house now, it's it's a little haunted. Yeah. Now a very sweet old couple used to live there. Okay, I'm not making this up because I have some fucking proof and you guys are gonna see it. So this old couple used to live there, and they were very sweet to us. Uncle was very sweet to everybody, but the auntie was RIP, but she wasn't a nice person. Like, she used to bully puppies and her house help, their kids and all that. So anyway, so that's the case, and eventually she got very, very sick. And before she passed away, her husband did, and only her husband was taking care of her. So you can imagine how hard it must have been. So it was her in the house first, her husband, and like their house help. Okay, so house help, their kids and all that. Now uncle and auntie's son. Now let's call that auntie. So uncle died, and then exact 1 month later, on the same day, auntie also died. So the son, who was in Chicago, he told the house help to keep like the house in a good condition. Okay, so that happened. So now this one day in 2018, okay, this is like what, 6 years. Now in that house only 4 people live: the maid's husband, and 2 sons. Okay, so the son used to play with my brother, and they used to play downstairs. So I remember this one time, the maid came running to my house crying, like she was bawling her eyes out, and she came, and then she told she asked her son to come fast to her place, and then she was crying so much that my mom got worried, and my mom asked her that what happened, and then she said that no, मुझे वहाँ पे भूत दिखी है, मुझे वहाँ पे भूत दिखा है पेड़ पे. And my mom was like, what? And see, so my mom didn't believe it, but she was like, why the fuck would somebody lie about this? And she was crying. So then she said, मुझे पेड़ पे सोनी आंटी दिखी है, पेड़ पे, ठीक है? तो my mom was like, सच में? तो उतना हुआ, and then she took her bags and she ran. Now listen, the reason why you should believe this story is because why on earth would a house help, literally, and her family move out of a whole ass bungalow? Like, it's a bungalow, okay? They have everything. The only thing that they had to do there to live there was just clean up the house, okay? Just keep it livable. Or whenever the son comes from Chicago, he can come and visit his house. But they went because she was like, I am not doing this. So she left. Literally after that, I haven't seen her
Like she literally left and we were like, what the fuck, it was scary and all that. Now cut to 2020. So you see my room, right? All of this was made in 2020. So before that I used to live downstairs only, like on the same floor as my parents. So when we made this room, so this thing was like you see how it's a little big, right? So it was supposed to be a storage area, hall or something of that sort. It was supposed to be a hall because in front of the gazebo it was supposed to be a party gazebo. Well, fuck it, you get what I'm saying, right? So we were getting this room made, and then I was so excited. Like I was so excited to get this room made because just look at it. It looks so girly, right? So in 2020 it started happening, and then COVID happened and all that. But because of COVID, all of this process became very slow because obviously labor and all wasn't coming, right? Literally this we got this time when I came back in 2024. Anyway, so my bed was ready. So as soon as my bed was ready, I was like, I am sleeping in my room. So I started sleeping in my room. That time we didn't have curtains covering the gazebo. Okay, now let me show you what I'm talking about. See, you see these curtains. So I have doubly layered curtains. Okay, so when it's shut, you can hardly see anything inside. Like you saw how much difference it made, right? So this wasn't there that time, but I was ready to sleep on my bed. And I remember this one time I was sleeping, and first of all, I used to sit there, okay? You see those little chairs over there, okay? I love sitting there at night. So I was sitting there and I heard someone running. Like literally, like, do you hear my stomps? Like I literally heard that and I was like, what the fuck? But then, you know, I wasn't bothered that much. So I was like, fuck it, whatever. So that happened. And then I'll show you one more thing. Okay, then I'll sit down again. So I'll show you. You guys see this wall like this thing, है ना? So the thing is that by wall I mean like, I'll show you. This thing. Yeah. So we made this so that our house is a little, you know, separated from theirs. Now I'm just gonna show you that house and you'll know what I'm talking about. Like you'll literally know because just see it. Just see the house for yourself. And still, if you don't believe me, then fuck off. I mean, don't fuck off, but just believe me. Look at the house. Did you see it? Anyways, I'll put some better clips if I can. So that's the house. So we put this wall to separate my gazebo from that house because I don't know, my dad just wanted to do it and nobody questioned it. I fuck you not. ये दीवार इतनी बार टूट चुकी है. Literally, I'm not kidding. This is the 4th time we've put this up. I don't know why. It was like somebody is actively trying not to keep this दीवार in between of us. So वो हुआ, but लेकिन इतना हमने ध्यान नहीं दिया. हमें लगा था कि हाँ ठीक है, गंदा काम किया होगा, लेबर ने, blah blah blah, whatever. Now the story time. Okay. I'll quickly finish this because this video is getting long. So, main scene was that I was sleeping here. That's my side of the bed. So I was sleeping. And then suddenly I hear a knock from this door. Okay, this one. And you know how I told you like this is a back door, right? So nobody comes from here. So, but it's also connected to the next house. And I live in a joint family, so we have my house and their house. Okay, so this is my house, this is the haunted house, this is my house, this is the haunted house, and this is their house. So I was like, maybe it's my sister, you know, they must be knocking. But I still didn't open because I was scared. I literally, so first it was like, I'll show you, I'll knock on my bed and I'll show you how it was. So I was like, you know, could be, because that time there were a lot of storms happening. So I was like, maybe it's just like, you know, chair or some weird sound. So then I started using my phone, blah, blah, blah. And then suddenly I hear like proper banging. I fuck you not. I picked my phone, I picked my charger, I ran, okay? I ran to save my life. I went downstairs and I was so scared that I slept with my grandmom, literally.
एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई टोल्ड माय पेरेंट्स एंड माय डैड वाज लाइक भूत वूत कुछ नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं नहीं होता है, मुझे दिख गया ये वो सब हुआ, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने वास्तुशास्त्र, तो उन लोगों ने उन आंटी, बेसिकली शी वाज अ साइकिक, ओके, तो उन्होंने उनको घर पे बुलाया और उन्होंने बोला कि वो मेरे रूम में आई, तो उन्होंने बताया कि तुमने जो गजीबो बनवाया तुमने कोई गलत जगह बनाया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, उसको ठीक कर सकते हैं। और मेरे ना यहाँ पे एक मिरर भी लगा हुआ था, तो उसने मुझे उस टाइम पे बोला था कि वो मिरर हटा दो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी दिखती है सोते टाइम उस मिरर में, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैंने नहीं हटाया था क्योंकि मेरा काफ़ी एस्थेटिक था। तो ये बुरा सीन था। उसके बाद बेटर हो गया था और फिर मेरे को पुणे जाने से पहले मुझे यहाँ पे अजीब से सपने, और उसने मुझे ये भी बोला था कि तुम अपने कर्टन्स जब तक नहीं आ जाते तुम इस रूम में मत सो, क्योंकि जो भी बाहर है वो तुम्हें अंदर सोते हुए देख पा रहा है। तुम्हारी द मोस्ट वल्नरेबल सेल्फ इज़ व्हेन यू आर स्लीपिंग, राइट। तो फिर मैंने पापा ने नेक्स्ट डे पर्दे लगवाया और फिर मैं तब से इधर सोने लगी, क्योंकि मुझे अपने रूम में तो सोना ही था, ठीक है। तो हमने अब पूजा वूजा कराई और फिर सब ठीक हो गया। तो मुझे याद है कि मैं 2021 में पुणे आने से पहले मैं यहाँ पे सो रही थी और मुझे सपना आता है कि मैं बाहर गई हूँ और मैंने ऊपर देखा। तो अभी जिस रूम में मैं रहती हूँ, आप अगर पीछे गेट से निकल के ऊपर जाओगे तो ऊपर छत है, ठीक है। तो मैंने ऊपर छत की तरफ देखा और लिटरली दो औरतें, 2 लेडीज़ वहाँ पे ऐसे खड़ी थी और वो मुझे ऐसे नीचे देख रही हैं, ठीक है। मेरी फट के 4 हो गई और मैं ऐसे खड़ी हूँ और मेरे सपने में, क्योंकि मुझे ऐसा अभी तक याद है, ठीक है। और वो ऊपर से मेरे पे कूद गई एक, ठीक है। तो और पता नहीं क्यों मेरे सपने में कहीं मेरे दिमाग ने, मेरे दिल ने मुझे, या हो सकता है कि मेरा बस सपना ही हो, उसने मुझे बताया कि अगर तू जो भी तेरे पर कूदा है उसको अगर तू उस घर में फेंक देगी ना, द हॉन्टेड हाउस, तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं वापस आएगी। तो वो मुझे एक बार सपना आया, ठीक है। तो ऐसे मुझे इतने सारे सपने आने लग गए। एंड द फ्रीकी पार्ट इज़ कि मुझे हमेशा सेम भूत दिखता था, ठीक है। तो इतना हुआ। उसके बाद फिर लास्ट ईयर इन 2023 जून, जब मैं यहाँ पे आई समर ब्रेक पे, तो मैं सो रही थी, ठीक है। और मुझे दोबारा सपना आया और दोबारा वही लोग आए सपने में। और द थिंग इज़ कि मुझे अपने सपने में पता था कि मैं उठी हुई हूँ, मतलब कि मैं सो रही हूँ। तो आई वाज ट्राइंग टू वेक माई सेल्फ अप, और मैं अपने सपने में, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सो रही हूँ कि उठ रही हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। और मुझे याद है वो दोनों जो भूत मुझे दिख रहे थे वो मुझे खींच रहे थे, लाइक दे वर लिटरली पुलिंग मी बैक टू स्लीप। And I was like, what the fuck is happening? So in my dream, I went downstairs and I told my mom that, listen, mom, wake up. If I'm not up, like अगर मैं नहीं उठी हूँ तो मुझे उठा दो, क्योंकि मुझे कोई सुलाना चाह रहा है। और जैसे ही मैंने अपनी मम्मी को ये बोला है सपने में, वैसे ही किसी ने मुझे पीछे खींचा, मुझे वापस सुला दिया है। और ऐसा 2-3 बार हुआ। मैं 2-3 बार उठी उनको बोलने के लिए। ये सब अभी सपने में, मैं लेटी हुई उठी रियल लाइफ में, ठीक है। और फिर 3:30 बजे के आसपास अचानक से मैं उठती हूँ, मुझे पसीने आ रहे होते हैं प्रॉपर। अब मुझे लोग बोलते हैं कि दिस कुड बी स्लीप पैरालिसिस, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है एंड आई डोंट बिलीव इन इट। तो मतलब होता होगा लोगों को, स्ट्रेस वगैरह की वजह से होता है, बट आई डोंट थिंक मुझे हुआ है, ठीक है, टच वुड। तो ये सब हुआ और मैं बहुत डर गई और मैंने अगले दिन मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यार यहाँ पे, और मैं जब आती हूँ ऐसा होता है। मेरी मम्मी मुझे बोलती कि भाई जब तू यहाँ पे नहीं होती है तो तेरा भाई यहाँ पे सो जाता है कभी कभार, उसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। तो आई वॉज लाइक वाई द फक इज इट हैपनिंग विद मी, लाइक लिटरली वाई इज इट हैपनिंग टू मी। और उस रात लिटरली सोने से पहले मैंने अपने प्राइवेट पे एक ऐसी रील डाली थी जो मैं अभी यहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। और अगले दिन जब मैं मम्मी के पास नीचे गई, मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी दोस्त ने कमेंट कर रखा है कि तेरे शीशे में कौन है। एंड आई डोंट नो इफ़ यू गाइज कैन सी इट प्रॉपरली, आई कुड, अ लॉट ऑफ पीपल कुड, कि उसमें मेरे पूरे मिरर में एक छोटा सा साइड में फेस है। आप इधर देख लोगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और वो उसने तो मजाक में ही बोला था, उसको लगा था पता नहीं क्या होगा, बट दैट्स लिटरली द फेस दैट आई सी इन माई ड्रीम्स। आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट, लिटरली आई हैव गूज बम्प्स राइट नाउ। तो मुझे लगा कि भाई ये क्या, और मैं चुप हो गई एकदम। और फिर मेरी मम्मी ने बोला कि अब तो तुझे एक नई साइकिक पे चलना ही पड़ेगा। तो हम उस साइकिक पे गए। उसने बोला कि कुछ एनर्जीज हो सकती हैं जिनको लगता होगा कि आप इतने टाइम यहाँ पे घर पे वापस नहीं आते हो, तो उन्होंने अपना समझ लिया होगा इस एरिया को। तो ये हुआ। और फिर मैंने आपको दिखाया ना कि वो शीशा में वो दिखा, तो उसके बाद से उसने मुझे रुद्राक्ष दी पहनने के लिए, जो कि लिटरली मेरी अंदर पड़ी है, मैंने सोने से पहले उतारी थी। और उसने मुझे सारे ब्रेसलेट्स दिए थे। मैं 5 ब्रेसलेट्स पहनती थी, जिसमें से 3 टूट चुके हैं।
तो अभी ये दो यूजुअली कहते हैं कि तब टूट जाते हैं जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है, आपको बचा रहे होते हैं तो टूट जाते हैं। काफ़ी डर गई थी, तो उन लोगों ने उन्होंने मुझे बोला कि वो जो शीशा है वो तो आप उतार के दफना दो, लाइक लिटरली bury it, like literally bury it. And I was like, okay fine, fuck it, I'm gonna do it. I don't care how cute that looks there, क्योंकि you know what I'm talking about, right? It looks a little cute. तो फिर उन्होंने वहाँ से शीशा उतारने के बाद मुझे ब्लैक ओपीएम तो नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट, सम ब्लैक स्टोन दिया, जो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ लगाओ जहाँ पे आपने वो मिरर लगा रखा था। लुक एट दिस, यू सी दिस, मैंने लिटरली ये स्टोन यहाँ पे लगाया हुआ है जहाँ पे मेरा मिरर था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये स्टोन जो है वो सारी नेगेटिव एनर्जी को रिवोक करता है, तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो लिटरली ये हुआ था, और दिस इज़ द एंड। और मेरे को, और इसके साथ बीच बीच में ये तो होता ही रहता था कि मुझे वो बंदियाँ तो मुझे बहुत दिखी अपने सपने में, आई एम नॉट गोना लाई। एंड मुझे ऐसा डर नहीं लगता अपने सपनों में अब, क्योंकि हम लाइक जो भी है भैंचो भगवान मेरे साथ है। और हनुमान चालीसा तो मुझे आती है, और मुझे ऐसी बहुत आवाज़ें आई ऊपर से धप 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 की, लाइक स्टॉर्म्स एंड ऑल दैट, बट दैट इज इट। एंड नाउ टच वुड दोबारा मुझे अब यहाँ पे नहीं हुआ है। आई अपडेट, दिस इज टुनाइट इज लिटरली माई लास्ट नाइट हियर, और मैं सुबह सुबह बात कर रही हूँ कि रात में मेरी बात करने में गान में कूदा ही नहीं, मैं इस बार में कभी बात ही नहीं करती हूँ रात को। तो अगर कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूँगी, बट आई होप कि ऐसा कुछ ना हो। दैट वाज माय little story time. I hope you guys liked it. I have a lot of stories, but I don't know if people really enjoy story time. I love telling stories. I love yapping. I'm a big yapper, but I don't know if people like it. So if you do like some story times, comment and let me know. I don't like asking for comments, bitches. Just do it. Just comment. I'm literally working so hard. I'm an economics student. Now I'm trying to expand my business. Fucking comment. What does it take, huh? And oh my god, literally 80% of my viewers haven't even subscribed to my channel. तुम्हें तो पता है ये भूत मेरे कितने दोस्त हैं, सुन ही लिया तुमने। नहीं करोगे तो भेज दोगे तुम्हारे घर। Anyway, that was it for this video. I will see you guys later, and okay, bye.